Hope I'm properly audible. There is no noise or nothing. Okay. If anytime there is any issue, just let me know. Okay. Okay. So basically, myself, Vinita Singh from Computer Science Department, and I'm going to start with your R languages. Okay. So as the this is where we are learning about the emerging technologies. So you know that R is one of the language along with the Python, which is used most for the analysis and everything. Yes, so today we will see the basic of R, what is the R, how you are going to install R language and everything. Yes, so that we are going to see today. Now when I will start with the R. Before starting with R, do you anybody have any idea about R language, what it is? Any idea? Any? Yes. Yes. Are you saying anything? You are not audible to me properly. Yes. If there is any issue with the network or something, you can drop message in a chat box also. Okay. Very good. It's a statistical programming language. Okay. Used for statistical computing and graphics. Okay. Anything else? Okay, when you are saying that statistical programming language, basically what happened, as I told you that it is mostly used for the analysis purpose, data analysis purpose, where we need to analyze the certain thing, certain kind of data. Okay, so like currently you must have seen during this pandemic that yeah, there are many kind of analysis like when this pandemic will end, how many peoples are affecting with this pandemic, what are the effect of this pandemic in a different sectors. Okay, so like this it is used for this is the current example where this analysis, statistical analysis has been used. So when we are analyzing the certain thing, what we do exactly, or data is given to us. Okay, a certain amount of data is given to us, and what we are doing, um, they what they are doing, they are just analyzing this can the analysis can be done for the different purposes. Okay, there can be n number of purpose for analyzing the this kind of data. Okay, so yes, I got in lots of answer from you people, so at least you have an idea that basically what is our language. It's good. Okay, so today we will see that first I will just show you that what is a R, a little bit introduction of R, and then we will start with the installation of this. Okay, so I will just share my screen. Yes, so if you will see. Okay, so as you people had already told it, it is used for the statistical computing. It is basically used for the analysis and all. So same way, this is the it is same. So basically what it is including, so we'll go one by one. So yes, what is the what is R? R is nothing but a programming language which is basically used for the statistical computing, data analytics, yes, and scientific researches. Yes, as I have given you to example that how the like in this pandemic, how this
used for analyzing the different situation. Okay, so it is used for the analysis as well as the predictions. Okay, so based on that, whatever informations are there, whatever informations you are analyzing, you can represent it graphically also. Yes, you must have seen that the different graphical representation of results, whatever results you are getting after the analysis. Okay, so that is basically what we are doing. We are analyzing, and then we can visualize the analysis result. Yes, so it also provides the visualization for your result. Okay, so that is basically uh, R. Why to learn R? What are the why you should know about R? Yes. So first thing, it is a open source language. Can anybody tell me what do you mean by open source language? Yes, free to use. Anybody can use it. Yes. Yes. Please mute yourself because I think you are outside and it's creating noise. Okay. Okay, great. It come under the public domain. Okay, anybody can use. We can free to use or modify. Okay, yes. So basically, what is the what is this open source language? It is correct that whenever a language is open source, anybody's you can use it freely. Yes, you can use it anytime. Yes, yeah, it is easy to install, download and all. You can, even if you have certain idea, you can modify it. Okay, platform compatible. What do you mean by cross platform compatible? If you are running if you are creating your code or whatever things are there, if you are writing, it can run on a multiple platform. Yes, it can be it is basically known as a cross platform compatible. Okay, now when you are no when you are saying that cross platform, what is the basic meaning of that cross platform? That if you are writing the code on one operating system, you can run it or you can use it on another also. Okay, so that is basically meaning of the cross platform. So for example, if you are writing on one particular operating system, like if you have written the R coding for analysis on a Windows, then it can run on a Mac also. Okay, so that is basically known as a cross platform compatibility, where it is compatible with the other softwares as well as other operating system. It is a advanced statistical language, outstanding graphical representation. Yes, it has a n number of packages, functions and everything which you can use. Extremely comprehensive. You can use it very well, and it is easy to understand. It extends the supports the extensions. What do you mean by supports the extension? You can have the different extension. You can write down, like it can also support the txt file. It can store the support the r script file, so it can support the multiple extension. Vast community means there are a multiple community which are using it. Okay, then the next part is installation of R, so that I will just show you that how the installation of R is basically done, how you can install. It's very easy to install. Hey, just a minute. What you have to do, it's very easy to install. What you have to do, just go to the Google. I'm telling you very easy way to install. Now here, what happened that in R, you can get the R Studio. Now, what is the R Studio? R Studio is a way, matlab you can say that it is a editor where you can perform all the coding. You can do all the codings and all. You know that R language is nothing but an interpreter based. That is a command based language where you can just execute one line at a time. When you are saying that a particular language is interpreter based, you can just use one you can execute one line at a time. Okay, so here what you can do, you can
can get an editor. RStudio is an editor where you can, by using it, what you can do, you can install the you can type your program entirely and you can run in one go. Okay, so instead of using the command view, what you can do, you can use it like an editor where you can write your entire program and you can use it. Don't worry, I will just show you, then you will understand it better. So what I have to do, I have to just go to type RStudio. Okay, the first link itself, the download the RStudio ID, just go to that. Okay, so here when you want to download, here you can see that there are some RStudio download. This is the free version, this is with a particular one. So we require the RStudio desktop, we don't require the RStudio server. Server is different. Okay, server is like you want to store your data over there, जैसे आप Google Drive वगैरह use करते हो. Okay, when you are using the Google Drive, what you are doing, you are storing your information over there, that you can create the different thing with the data. So that is a different thing. So what we require a RStudio desktop. So what you can go, you want the free wala. So we will just install the first one, that is a, now here what it is saying that one install R. Okay, so पहले वो क्या बोल रहा है, आपको क्या इंस्टॉल करना है, you have to install R. Then what you have to do, you have to download the RStudio desktop. Okay, so first what you need to install, you need for RStudio you need to install the R. Because what is the RStudio, what I told you, that it is an editor. Where it provides the interface where you can do the you can do the coding easily, and you can visualize the graph and all easily. Okay, so that is basically for RStudio is just an editor. So for using the RStudio, you must need to install the R. Okay, like even अगर आपने कभी, आप लोगों में से किसी ने Java use किया रहेगा, so if you want to use NetBeans, if you are using the NetBeans, so before using the NetBeans, before installing the NetBeans, it is compulsory that JDK should be installed in your device. बराबर, because NetBeans is the editor which provide the different features to use the Java language. Okay, so the same way here also you need to install the first R. So this RStudio, which package it require, it requires R 3.3.0. So what we will do, first we will download this. Okay, now when you are going to this, what it is asking, download R for Linux, download R for Mac OS, download R for Windows. So what we want for the Windows. Okay, okay, so this is basically how you are installing. So install R for the first time. Okay, so now here you can see that different packages are available. You can have the different R packages. So minimum आपको R का different versions है. So minimum version for using RStudio is R 3.3.0. उसके ऊपर का कोई भी package you can use. Okay, so we will install this. You can see over here. So we'll just save it. You can see it is for 64-bit. Okay, once it is done, then you can download RStudio for Windows. Okay, so you can see RStudio is there. So we can download both. Now, where we have installed, where we have saved our file, it is saved over here. It's still getting downloading. So just wait. So it is easiest way to install the R. Here, if you will go below, you will see that you will get the download package for the different things like Windows 10 and 11, Mac OS, Ubuntu,
Fedora 34, Red Hat, Debian. Okay, so for every particular operating system, you will get the you can download from here. Okay, so this is like a zip file or a tarballs which you want to dial, means this will be downloaded in a zip format. Then you have to, what you have to do, you have to extract it, and then you can install. Okay, so the easiest way, you can just click on download, and then first you have to install this R. Okay, okay, so you have to just run it. When you are running, just select here, run. First we have to install R. As you can see, that's why I have shown you that it has given. So what we are going to select, we are going to select the English. Then you have to just click on next. Then it will give the location where it is getting installed. So it is getting installed in a C, program files R. If you want, you can change it, but mostly we want that our all the software should be installed in a C drive. Okay, so we are installing at the same place. Okay, so you have to just so first you have to install R, then you have to go for R Studio. You have to just, once R is installed successfully, now R Studio. Next, next. Again, installing into the program files. Install. Okay, so it is also installed. So we are done with the installation. Anybody have any doubt in installation? Okay, it's very easy. Then if you will search for the this, you will get R Studio. Yes, so you can get R Studio app over here. Okay, yes, if you you can just get you can just see over here. We will just open it. uh yes, if you want to practice in online session itself, then you can install it, else you can install it later on. Okay, it depends on you people. So you can, I will just tell you the things, you can do it later, or I will give you the time to do all these things. First let me complete the things. Okay, so first let me complete the introduction and everything, then you can start with your installation and everything. Yes, so you can see that it's
is the RStudio environment, where here you can do the typing and all, and here you can see the output. This is basically where you can see the graphical representation. Output in the sense, if you are typing something over here, you will see output over here itself. But if there is any graphical representation, you can see it over here. Okay, now here, for example, this is known as an interpreter base, where if I write something print, so here for printing, मतलब अगर आपको कुछ display करना है, then you print. So if you are writing print ABC, it is just a command, so it will get, you can, it got printed. It is clear, it got printed over here. So you can see that here you can execute only one statement at a time. Okay, you cannot type the multiple statement. Okay, so here only one statement will be executed at a time. So that is basically known as a command prompt, or you can known it is known as a, like it will be like R language. अगर सिर्फ आपने R install किया है, so it will be look like something this. You cannot type more than one line. आपको you have to type one line, one statement, you have to execute it, then you have to go for the next statement. Okay, so what we have that's why what we have done, we have studio. So in RStudio you will get the file option. In a file option you will get the R script. Okay, so here you can get the R script option. Okay, and when you are clicking on this, so what you have to do, again I'm just telling here, I hope you got it. When I'm writing any command, it will be executed one command at a time. We can not we multiple statement at the same time. Okay, so what you can do, you have to just go to the file, you have to go to the new file, and you can go for the R script. Okay, so now here you can see that you can create the multiple kind of file. You can create the C file, C++ file, JavaScript file, HTML file, CSS file. Yes, so that's why it is called as a cross platform, because it supports a multiple thing. But right now we will just concentrate on the R script. Okay, so you have to just click on the R script. Yes, now you got the some this, where now you can write down the multiple statement. Okay, so we can now, here we can write down the multiple statement. When I am typing, it will go to the next statement, it will not execute it. So that is the difference between this R script file. And when you are on a command, or a console, you can write down only one statement at a time, it will be executed. Okay, while here when you are there, you can execute, or you can have the multiple statement. Okay, you can write down all entire your program, then you can execute at a one go. So that is how you can select the R script file. Is it clear to everyone? That much is clear? Yes, ma'am. Okay, good. So that is basically how you are going to start with your R programming. So that is the introduction to the R. Then we have installed the R. Okay, our studio, we have installed RStudio as well as the R. Now the next thing, we will see the basic funda of this, like basically what it includes, how you can create the variables, how you do the initialization and all. So simply we will go one by one. For a simple, if you want to do the addition of two number, ठीक है, अगर आपको addition of two number करना है यहाँ पे, so how you can go for it, how you can do the addition of two number. Just a minute. Okay, so what I will do, for example, if I'm taking a variable a, if I'm taking a variable a, I can initialize a particular value like a 10.
Then if I'm taking a value b, which I'm initializing as a 20, okay, then I'm taking a variable c, which I'm writing a plus b, okay, then I can just print it. What I will print? I will print the value of c, okay. So if I'm printing, I will select the entire thing, and I will just click on run. So I can execute multiple statements. So here you can see that it is printing the first R programming. The value of A is 10, the value of B is 20, then C is equal to A plus B. Then I'm printing C, the value is nothing but it is nothing but 30. Okay, so that is a simple R programming where you can take the values and you can just take those value and then you can sorry, you can print it. Okay, so that is very simple way. Now in our language, you can see that when I have created this particular one, I know where I have mentioned the particular type. मैंने कहीं पे भी टाइप मेंशन किया क्या? अगर आप लोगों ने अगर कोई और अदर लैंग्वेज किया होगा लाइक CNC, so you have to declare the variable like if you want to take the int variable, then you have to declare the int type. Int मतलब integer. Okay, so I hope you people know the basic data type. Like there are a basic data type like integer is there, then float is there, then double is there, okay, then char is there, then string is there, character is there, then string is there. Okay, so these are nothing but a basic data type. Okay, so these are the basic data type. Before proceeding, I will just answer some question which has been asked by some student. Are programming same as a Python? See, when you are saying that when you are comparing one language to another language, it is yes, you cannot do the comparison, but yes, the syntactically if you are asking, like जैसे हम लोग Python में भी what we do, we just declare the variables, correct? We don't specify its type and all. We just declare the variable, whatever variables are there. For example, if I'm writing a equal to 10, then it will become a new, it will take the numerical data. If I'm writing a is equal to abc, then it will take the string data. Yes, so same way here also, like in that syntactical way, you can say that yes, our programming is somewhat same as a Python. Yes, so Uh, basically here also you can declare, you can do the same thing. So here we don't need to specify the type of the variable before. Okay, whatever value you are assigning to the variable, that it will take those type automatically. For example, a simple example, if I'm writing the same variable a, if I'm writing its value as a, if I'm taking a variable a, if I'm writing its value as a abc, okay, so this variable will be treated as a string variable, correct, because it is taking the string data. What is the difference between character and string? When you are talking about the character, it can take only one character at a time. Yes, while when you are talking about the string, it can take the sequence of the characters. Yes, so that is the difference between character and string. Character can take only one particular character at a time, while a string data type can take the multi sequence of character. Okay, so here when I have written a is equal to a, the a will act as a character variable. When I have written a is equal to this a, yes, mute yourself.
When I'm writing a is equal to this, that is a sequence of character, this a will become a string variable. Okay, same way if at the I'm writing a is equal to 10, then this a variable will become a integer data type. Okay, if I'm writing a is equal to 5.6 something, then this a variable will treat it as a decimal value. Okay, so basically in case of the this, that is r, I said before also, same as a python here, the whatever value you are assigning to the particular variable, it will take that particular type. So you don't need not to specify the type specifically. Okay, ऐसा नहीं है like in C language or other language, C, C++, Java, what you have to do, if you want to use the variable, first you have to declare a variable a. Then here in a, when you are declaring it as an integer, now you can take only the integer data. अब अगर आप a में if you will try to store the string data or character data, it will not accept it. Why it will not accept? Because you have given the data type as a. Okay, so here in this language, what basically happened, first you have to specify the type, then you can assign only those value, you cannot assign any other value. While in r, this is not a case. You can use the value, you don't need to declare the value before. You can use at any time you want the particular variable, and you can assign any kind of value. Whatever value you are assigning to it, it will be act as that type of variable. Yes, now when you are talking about the float and double, both are going to take your decimal value, but for float can take only 4 byte of data. मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा ले सकता है, only 4 byte, while the double can take the data till the 8 byte. Okay, so that is the difference between the float and double. Now you will say that if both are taking the decimal value, then what is the use of this? See what I said, that the a float can take the 4 byte of data. Okay, while double can take 8 byte of data. So if you are performing certain computation where you are getting a very large decimal value, okay, so that decimal value cannot be if it is extending for more than 4 byte, then it cannot be represented by using the float, then you require double to represent it. Okay, so that is the difference between the float and double. So at least the variables are clear to everyone. Anybody have any doubt in variables? Okay. While downloading, do we have to initialize zip or tar? No, what I said you dear, you have to just, that's why I have given you the simplest way to install it. You have to just click on RStudio download, go to this particular link. Okay, once you are going to this particular link, just scroll down. Now here you require to click on a free wala download. Okay, when you are clicking on this free download, you will get this two options. So first you have to download R from this, and then you have to download from this. Don't go for this version. This will become confusing for you. Zip and tar, don't go for all these things. मैंने आपको इसके लिए easiest way बोला इंस्टॉल करने के लिए. फर्स्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, देन यहाँ से डाउनलोड करना है. Okay, just do one thing. You people just do one thing. First, everyone install R in your device and let me know if there is any problem. Ma'am, can you give an example for float and double? See dear, what I told you that, for example, if you are having a value, a decimal value, which is very large, okay, okay, if you are taking some decimal value which is very large, consider this one. Now this is of consider this information is of 5 byte, this decimal value is of 5 byte. I'm just giving an example. Then this 5 if it is taking a memory space of 5 byte, then it cannot be represented by this. I hope you people know that a simple thing, that for example, if you are taking a integer value which is of which is which can have maximum space of 2 byte, बराबर. So वो कितना बाइट स्पेस ले सकता है? It can take the maximum of 2 byte of space. Okay, so 1 byte में कितना होता है?
1 बाइट में कितना बिट्स होता है? 8 बिट्स होता है, ठीक है। सो वैसे ही 2 बाइट में कितना होगा? 16 बिट। ओके। ओके। सो इफ 1 बाइट में 8 बिट्स हो रहा है तो 2 बाइट्स में कितना होगा? 16 बिट होगा। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई कैरेक्टर आपका या कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप आपका सिर्फ 1 बाइट ले रहा है, बराबर, इट्स कैपेसिटी इज ओनली 1 बाइट, मतलब वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है? 8 बिट्स। तो उसको अगर आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, जस्ट राइट डाउन 2 raised to 8। Okay, because it is 8 bits, so it will be like a 2 raised to 8. Matlab 2 raised to 8, when you are doing what you are going to get the value, I think you will get the some value like a 256 or something. मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितना वैल्यू ले सकता है? इंटीजर वैल्यू कितना ले सकता है? सिर्फ 256 तक। उसके ऊपर अगर वैल्यू गया तो इट कैन नॉट टेक। सेम वे, when you are talking about 16 bit, its maximum capacity is 2 raised to 16। ओके, सो इसका जितना भी वैल्यू होगा वो उतना ही वैल्यू ले सकता है, उसके ऊपर का वैल्यू नहीं ले सकता। आई थिंक इट विल बी 3 to समथिंग समथिंग समथिंग। ओके। देन इफ यू आर सेम वे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 4 बाइट, सो 4 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे? अगर 1 बाइट में 8 बिट्स है, मतलब 4 बाइट में कितने बिट हुए? 32 बिट्स, बराबर। मतलब इसका कैपेसिटी कितना हुआ? 2 raised to 32। तो ये कितना ले सकता है वैल्यू? अभी ये 2 raised to 32 का जो वैल्यू होगा, सिर्फ उतना वैल्यू ये ले सकता है, नॉट मोर देन दैट। सो इट कैन टेक ओनली 2 raised to 32 वैल्यू। सेम, तो मतलब अगर ये 2 raised to 32 ले रहा है तो इसका जितना वैल्यू है, इट विल गो वैल्यू, इट कैन टेक ओनली दैट मच वैल्यू। तो अगर आपका वही 8 बाइट है, अगर आपका डबल 8 बाइट है, तो 8 बाइट पे आपके कितने होंगे? 64 बिट होंगे, बराबर। मतलब वो कितने वैल्यूज ले सकता है? इट कैन टेक द वैल्यू टिल द 2 raised to 64। आई होप यू आर गेटिंग इट। So that's why its range will be exceeded. Okay, so I hope that is clear to everyone. Okay, okay, okay. So now what you have to do, everyone just first install RStudio, okay, and R. I'm just giving you 5 to 10 minutes. Just do the installation part, then we will proceed ahead. If you are having any issue with the installation, then just drop message in the chat box. Okay, so I hope I'm just giving last 5 minutes. Everyone do it and just let me know.
progress. Okay, I hope nobody have any problem with the installation part. Shall I continue? Okay, so we will continue now. Okay, so there was one more doubt that how I have created written the multi-line code. See, when you are going to this R Studio, what you have to do, you have to go to the file. In file, go to the new file and you select the R script. Okay, so when you are selecting the R script, this will be open. So where you can write the multi-line program. Okay, I hope your doubt is solved. Okay, now here now one more thing, when you are assigning these values, either you can use the equal to sign or you can use the left arrow. Okay, so somewhere you will see the left arrow, somewhere you can see the right arrow. Okay, so for the assignment of the value you can use any one of them, that is not an issue. Okay, either you can use the equal to sign or you can use the left arrow or you can use the right arrow. Okay, so you can use any one of them for the assignment. For example, now I will select the entire one, and I will run. Now here you can see that what error it is giving. See, when I'm assigning like this, like for here, if you will see this one, if you want to execute one line, you can just select one line and you can execute. So here there is no problem. When you are assigning the value here, there is no problem. When you are doing this one, what it is giving? It is giving that error. Yes, what error it is giving? Wait, what error it is giving, could not find this function. Yes, now if you will do this one, I have just used the left arrow and I will run. Now it has been run. Okay, now what is the problem with this? Why it was not taking the right one? अगर मैंने यहाँ पे इसको right किया, yes. So what happened that when you are assigning the value, what is the difference between this left and right? Why is sometime for the left one it will give the error, or for the right one it will give the error? Okay, so basically what happened in this case, what is the meaning of equal to sign? Means what कि आपका मतलब आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. जैसे कंसिडर करो कि आप, ये आपका मेमोरी है, ठीक है, आपका मेमोरी एरिया है यहाँ पे. So you know that कि आप कुछ भी करते हो, whenever you are creating any variable, it will be created into the memory. So when you write a equal to 10, okay, so what happened? A variable a will be created and 10 will be assigned to it simultaneously.
Okay, so both the things will be done at the same time. When you are using the left one, when you are using the left operator, okay, so आपके memory में क्या होता है, what happen, the first, what will happen, the first variable a will be created. यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक साथ होता है, मतलब वेरिएबल ए क्या क्रिएट होगा और वैल्यू 10 विल बी असाइन. बट व्हेन यू आर यूजिंग ए लेफ्ट वन, सो आपका क्या होगा, पहले मेमोरी में आपका क्या क्रिएट होगा, ए वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर बाद में जाके उसमें वैल्यू 10 असाइन होगा. Okay, and at the same time when you are writing this one, assigning this one, तो पहले क्या होगा, आपका पहले एक वैल्यू 10 आएगा, फिर मेमोरी में जाके a क्रिएट होगा. ओके, सो वेरिएबल यहाँ पे बाद में क्रिएट होगा. उसकी वजह से क्या होता है, what is the problem with that, that when you are using the right hand side for the this thing, it will say that the value, because आपका क्या होगा, पहले वैल्यू 10 आएगा and then the variable b will be created. Okay, so that at that time it will create the problem. Okay, so it is always better that instead of giving this preferences, it is always better that you should use the either equal to sign or this left one. With the right one, that is the issue, because उसमें क्या होता है, पहले value आता है, then variable assign होता है, and that's why sometime it creates the issue. Okay, I hope that is clear to everyone. So I hope everyone is more comfortable with the equal to sign for the assignment, so you can follow equal to sign. Okay, but somewhere you may see this arrow, that's why I have just given you for your information, I have given this example to you. Is it clear to everyone? No, you cannot do the reverse calculation. If you want to do any reverse calculation, for that you have to perform give write down the particular logic, but directly you cannot perform any reverse calculation. For example, when you are saying that you want to do the reverse calculation, means what, you want first add to 20 then 10 or whatever the, yes, you can do it through the functions and all, you cannot do directly. And one more thing, in this value added courses, as all students are there, like a BCom and all stream students are there, so we cannot go beyond the particular one, because everyone should understand the thing. Okay, so that's why we are going with very basic thing. So that is what you have done with the programming, with the how you can assign the values and all. So I hope everyone is clear with the data types and the variables. Yes. So in R, it is like whatever value will be you are going to assign to the variable, it will take those particular one. Yes. Okay. So okay. So that is the simple way how you can do the create the variable and you can do the assignment. Now the next one, what if you want to read the value from the user? मतलब ये जो 10 and 20 values आपको लेना है, this value you don't want to assign in a program itself, you want to take this value from the user. Yes. So if you want to take these values from the user, then what, how you can take that value from the user? Okay, so you can just write down the variable name. Okay, and then you can just use the function read line. Okay, so what read line function will do, it will read the value from the user. Okay, so what it will do, it can read the value from the user. For example, if I'm writing this and if I want to print the value of a, okay, so if I will execute this line at one line at a time, now here what it is giving, it is giving the error that it could not find the function read line. Okay, so L is a small one.
Okay, so you will you can see that on a command prompt over here. Here now it is prompting for the input. So for example, I am giving the value as a 45. Okay, so if I will execute this both lines simultaneously, then it is directly printing that particular value A. Yes, so it is whenever you want to take any input from the user, first you have to take that value, for example 45. Here you have to enter that value and then you can proceed ahead. Okay, so for taking you values from the user, you can use the readline method. Same way for the B also, you can use the readline method. Okay, then what I will do, I will do the set C is equal to A plus B and print C. So what we will do, if I'm writing A equal to readline, so it will ask for the value. For example, I'm entering the value as a so if I'm here, I have to go here. Just take see to कि आपका cursor आप properly change कर रहे हो. So here if I'm entering value 89, so it has take the value 89. Then I will take the value of B. It will take, for example, I'm taking the value as 78. So it will take that value, and then when you are adding it and you are executing it, it should give the value. If you want to pass any particular message, you can pass the message over here, like enter enter the number. So you can pass the message also to the readline function. If you want to execute entire one, you just click on entire one and you can run. Now here you can see that when you are prompting and you are not running the entire thing, it is not, it is taking the previous value itself. Okay, so what you have to do for taking the value, you have to run one line at a time. So it is asking for the first number, so you can enter the first number. Then you can run the second one, so you can enter the second number. Okay, then you can go for the C equal to A plus B. Okay, now what error it is giving, it is giving an error that non-numeric argument to the binary operator. See, read the error properly. What error it is giving? Non-numeric argument. So what it is saying that A and B is a non-numeric number. ठीक है, why it is a non-numeric? See, हमने यहाँ पे क्या किया है, read line किया है. So when you are using the read line, what it does, it is going to take the value, whatever value it is taking, that values it is going to take it as a string value. मतलब आपने enter क्या किया है 45, but what it is going to consider it as a string. Okay, so what you have to do, you have to convert that value.
So what you are going to write down? You are going to write down a equal to as dot integer. ठीक है. So आपको क्या करना है, वो a का जो भी वैल्यू है आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, you have to convert it into the integer. सेम वे b का वैल्यू रीड करने के बाद आपको क्या करना है, b equal to you have to convert it to the integer. Okay, so once you are converting it into the integer then you can do it. So पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सिर्फ रीड लाइन करना है, तो पहले we are going to just run it. So it will ask for the number. For example, I am entering 45. ठीक है, this is done. Now what I will do, I will convert it into and I will show it. So it is converted and it has shown the value as a 45. Okay, now next I will go for the b dot read line. So जब भी रीड करना है आपको एक ही वैल्यू एट अ टाइम रीड करना पड़ेगा. ठीक है, so you have to enter it. Then what you have to do, you have to convert it into the integer. So you have converted it into the integer. Now you can run it and print it. So what is the answer? The answer is nothing but a 91. So clear? So it is very important that whenever you are reading a particular value, as I told you that it is an interpreter based program. So when it is reading value from the input, you have to wait. So you have to just first enter the number, then you can go for the another statement. So you have to execute it in part because it is an inter-based programming language. You can write down there and there is no issue. You can write down print B also. Okay, so you can write down it. If you want to save this code, you have to just either go to the file, okay, and you have to just click on save or save as. Okay, so अगर आपको ये फाइल सेव करना है, you can go to the save as, and then आपको जहाँ पे भी सेव करना है, you can say like I am saving into the rval. Okay, so here or I can just write down the create a new folder. And you can save over here. Okay, so like it is a addition wala program, so you can just give the name as a addition. Okay, so you can see that our script file will be stored over here. So हम लोगों ने कहाँ पे store किया है, we went to this R practical and your addition this practical has been saved. So next time you can directly do it, open it. See, whenever you are what I told you that first and foremost important thing, you have to follow the proper sequence. ठीक है, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है. मैंने आपको क्या बोला, पहले आप ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे, ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद यू हैव टू एंटर द नंबर ओवर योर, देन यू हैव टू प्रेस एंटर, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, देन यू कैन प्रिंट द नंबर. आर यू गेटिंग? अगर आपने ये पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं किया है और आप डायरेक्टली ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको एरर देगा, द ऑब्जेक्ट ए इज नॉट फाउंड. Yes, so first execute the line in a sequence. I told you that it is an interpreter based program. Even if you are writing the multiple line of code, but if you are taking the value from the user, you have to execute the first this line and then you can go for the further one. जब भी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, आप इतना ध्यान रखो कि उसके ऊपर वाले लाइन को आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है. आप जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ए वेरिएबल कैसे मिलेगा उसको? I hope that is clear. Yes, 06 roll number. Your doubt is solved. Okay, okay, okay. Great. So
it's I hope it's clear to everyone. It's a very basic one. I just told you the very basic topic about very basic thing about art. So if you will go lecture wise, so in lecture 1 we have seen the introduction and installation part. In lecture 2 we have basically the advantage and all we have already I told you that it is a open source and all. It will have the, it will give you the plot graphing and everything. Okay, so that is the advantage of it. Disadvantage kya hai iska? What is the disadvantage of it? Weak origin, data handling, basic security, complicated language, lesser speed. So iska weak origin matlab from where it is origin and what is the basic funda of it, it is a little bit jumbling over here. Data handling matlab pythons handle the data more better as compared to the R. Okay, so kahin kahin pe bahut large amount of data hai, so it is problematic. Basic security, yes, there is very, yes. हाँ It provides a basic security. Complicated language, you can see that even for the assignment we are using the 3 operators, and that also it is having the different way, different meaning. So that's why it is like a little bit complicated, and it provides the lesser speed. Okay, then packages, I will tell you what is that. So यहाँ पे सिर्फ packages तक ही दिया था, but I told I have even told you the basic of the R, the variables and all. Okay, so I hope that much is clear to everyone. So almost already we have completed the both the topics of lecture 1 and lecture 2. That was, this is the bonus for you people. Now one more thing, the packages. When you want to install the packages, so when you are using the R Studio, there is a two way to install the packages. ठीक है, एक तो है आप यहाँ कंसोल से भी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते। नहीं हाँ Yes, mute yourself. Okay, so there is a two way to install the packages. Now what do you mean by package? I will give a very simple example to you people. आप इसको ज्यादा दिमाग में मत लो, ये मैं सिर्फ आपके एग्जाम आपके समझ के लिए बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपने देखा, इफ आई वांट टू क्रिएट एनी ग्राफ, okay, if I want to represent any particular graph, so for that you require a particular package, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, so for that you require a package, you cannot do with this one simply, ठीक है। For example, I am taking a new R script file, okay, so if I am taking the new R script file, okay, and here if I want to in this program I want to create a graph, ठीक है। so graph create करने के लिए you need a package, मतलब पैकेज का मतलब क्या होता है, that thing is not directly supported by the R language, okay, वो जो भी particular thing है that is not directly supported by the R language, you have to take it from the external, मतलब आपको external एक part add करना है उसमें, so that it can be done, it is not a basic functionality of a R language, ठीक है। so for that you can add by using the package. Now if you want to, like I want to draw a graph, then I require a iGraph package. So there is a two way to install the package. One is you can go here, you can just type the install dot package, you can see the option is there, install dot package, okay, and here you can just type the package name, like I for a graph I need a package iGraph, and you have to click the enter, it will install the packages, okay, that is the one way. Okay, so that is a one way from command the console you can do that.
Another way, RStudio directly provide the facility. You just go to the tools. You have to click on install packages. Here from the repository CRAN, there is a CRAN repository, that is a R repository, from where you can directly, you have to just type the name of the package which you want to install. So what I want the iGraph. So in a tools, you have to directly go to the, again I will tell you, just in a tools, install packages. So if you don't remember the command for installing, आपको सिर्फ वहाँ पे tools में जाना है and you have to install. And for that there is a CRAN, that is a repository from where you can, or you can use the package zip file. मतलब CRAN repository का मतलब क्या होता है, it will go to the R repository, it will download this package and install it for you. बराबर. अगर आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आपको वो पैकेज देना पड़ेगा, मतलब आपने पहले वो पैकेज का जिप फाइल वगैरह डाउनलोड किया है और अभी आपको वो फाइल का लोकेशन देना है और फिर आपका वो इंस्टॉल होगा. इज इट क्लियर? द डिफरेंस इज क्लियर. If you are selecting the repository, you have to just type the name of the package. It will go to that particular CRAN repository, download the iGraph and it will install it. If you are selecting the second option, you have to give the location. मतलब आपको वो zip file, वो पैकेज का लोकेशन देना पड़ेगा. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका ब्राउज का ऑप्शन चला गया. ठीक है, तो आपको वो, आपने कहीं से वो पैकेज डाउनलोड किया है पहले से और आपको वो यहाँ पे ऐड करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो आप ये select. तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन कभी यूज होगा, समझो आपको यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल समवेयर एंड यू डोंट हैव अ नेटवर्क इंटरनेट. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट द सेकेंड फाइल एंड वो जो जिप फाइल रहेगा उसका लोकेशन आपको देना. So we will select the first one. I will select the iGraph and I will install it. So here you can see that that package is installing. You can see that it is downloading and doing the installation. It is installed the properly. Is it clear? ठीक है, अभी I have installed the package into my R. ठीक है, but how I will use it? So if you want to include that package in your program, then you have to make a use of library and then you have to type the iGraph, जो भी पैकेज आपको इंक्लूड करना है. Okay, so you have to use the library function for including the package into your program, into your code. Abhi, I will just give you a simple example. For this is just a simple, आपको मैंने पहले ही बोला, that is out of your syllabus. It is just for your understanding. So graph dot formula करके I can just create a graph. For example, if I am creating a dot b where a to c, and then if I am writing b to c, yes, and to plot this graph I have to use the plot. तो किसको प्लॉट करना है, कुछ भी प्लॉट करना है, you have to use the plot function and you have to write down plot. Yes, now if I will run this entire code, you can see the graph is plotted over here. Yes, this graph is plotted over here. What I have written graph dot formula. एक minute. I have written graph dot formula and I have written a to b. So there is edges from a to b, a to c, b to c. There is edges. Is it clear? Yes. So it's a very easy way. Okay. So this is just an easy way to create a particular, how to download the particular package and then how you are going to include it. Yes.
Okay, so this is how you can do it. So this is a very simple example. This is not a part of your syllabus. It is just I told you that how you can download any particular graph and how you can include. तो आपको syllabus में क्या है कि कोई भी पैकेज आपको डाउनलोड कैसे करना है और देन लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके उसको इंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। बाकी ये आई ग्राफ वगैरह आपको सिलेबस में नहीं है। ओके। Yes, dear, you can do all these things, but right now I cannot tell you all those things. As I told you that this also I just told you for the example. This is not part of your syllabus. So in a fourth session, we cannot do all those things. Okay, okay, okay. So just take your 5 minutes, 5 to 10 minutes, go through the things whatever we have done today, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, so everyone just try to recollect the things whatever we have done today, and if you feel that there is a particular thing which you are not getting, you can ask me. Okay. Yes, so anybody have any doubt? All the materials and everything will be provided to you in a classroom, don't worry about it. But in the session, if you have any doubt, you can ask. Whatever we have done today, if you are not getting the particular thing or there is any doubt, you can ask. Okay, so I think the things are clear to you people. You can take the 10 minutes break, then your next session will be started with the same meeting. I hope that you know that the same meeting get continues. Okay, so you also get relaxed for a 10 minutes. Okay, yeah. Okay, bye bye everyone. Take care. Everyone. Yes, I'm audible. Okay, so we'll start. So basically, as you know, there are 4 courses. From them, robotics is one of them. So in the robotics, we are going to see that what are robots, हम लोग robots को क्यों use करते हैं, then what is the term robotics mean, एक्चुअल में एक रोबोट का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, लाइक क्या सेंसर्स क्या है, फिजिकल बॉडी क्या होती है, उसमें सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, रोबोट्स कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग. ओके, विल स्टार्ट. Just wait, let me share a screen with you all. Yes, is screen is visible to everyone? Okay. So can anybody tell me what do you mean by robot? आपके डेफिनेशन में आप एक रोबोट को कैसे डिफाइन करोगे? आई नो वेरी वेल, रोबोट मूवी सबने देखा होगा. So can anybody tell me what do you mean by robot? Okay, machine. Anything else? Okay. Yes, very good. A machine will take our commands, and also student, some of the robots are have special powers. Special powers means they don't need any external signal. They are going to take their decision by their own, and that is called artificial intelligence. We are using artificial intelligence and made this type of robots which do not need any external signal.
machine operated by a computer program that can perform. Yes, very good, student. Okay, so we'll see. Okay, so what is robots? Robots are multifunctional, reprogrammable, automatic industrial machine designed for replacing human in difficult work. पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये रोबोट टर्म या रोबोटिक्स को क्यों लेके आए? वाई हम लोगों ने रोबोट्स का यूज क्यों किया? क्योंकि सम ऑफ द वर्क आर देयर जहाँ पे हम ह्यूमंस का रिस्क नहीं दे सकते थे। कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ ऐसे वर्क जहाँ पे ह्यूमन रिस्क ज्यादा है, ऐसे प्लेसेस पे जो वर्क है या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है या जो भी प्रोसेसिंग है, उसके लिए हम लोगों ने रोबोट्स को डेवलप किया। In the past, a robot was defined as a machine that was basically a clever mechanical device. Why we are called as clever mechanical device, student? Because हम एक रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि वो खुद की डिसीजन भी ले सकता है। आप रोबोट को दो वे में कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट वन बाय ह्यूमन सिग्नल एंड द सेकंड वन रोबोट टेक देयर ओन डिसीजन। ओन डिसीजन मीन्स वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उनको जो भी अपना इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो कैसे करना है। सेकंड, उनको किस पॉइंट पे जाके कितने डिग्री पे टर्न करना है, मतलब कैसे उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बट विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। स्टूडेंट, उस रोबोट को हम बोलते हैं, आप एक स्पेशल रोबोट बोल सकते हो जो कि खुद से डिसीजन लेता है। A robot is a machine, especially one programmable by computer, capable of carrying out a complex series of action automatically. तो हम रोबोट को जैसा एज यू सेड इट इज अ मशीन जिसको हमने प्रोग्राम किया है ताकि वो कॉम्प्लेक्स एक्शंस को कैरी कर सके। Robots can be guided by an external control device or the control may be embedded within. As I told you now, हम लोग रोबोट्स को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन by external control and the second one embedded जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल कंपोनेंट, जैसे वो खुद डिसीजन लेते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप व्हाट इज रोबोट इज क्लियर टू यू। इज देयर एनी डाउट? Okay, so if you have any doubt you can ask me. Okay, be frank, student. If you have any doubt you can ask at any point. And from my side, if I'm going to ask you a question, I need answer from each student, not only from 2 or 3 students, each student. Then only I'll move ahead. I hope I'm clear. So shall I move ahead? Okay. This is what कि हम लोग 3000 years ago Egyptian used human control static मीन्स हम लोग रोबोट्स को कब से यूज कर रहे हैं? 17th-18th सेंचुरी में हम लोग कैसे रोबोट्स को यूज कर सकते थे? लाइक पियानो प्ले करने के लिए, कोई भी राइट करने के लिए, कुछ भी सेंड करने के लिए, मीन्स कोई भी वर्क हो उसके लिए हम लोग रोबोट्स का यूज करते थे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट, व्हाई रोबोट्स आर यूज्ड मीन्स हम लोगों ने रोबोट्स को यूज करना क्यों स्टार्ट किया? So as I told, robots have replaced human in performing repetitive and dangerous tasks which humans prefer not to do or are unable to do because of size limitation, or which take place in extreme environments such as outer space or bottom of the sea. As I told you student, कुछ ऐसे space, कुछ place हैं जहाँ पर human का ज़्यादा risk है, hurt ज़्यादा हो सकता है, या कुछ limitations है, ऐसी जगह पे हम रोबोट्स को भेज सकते हैं। रोबोट्स को क्यों भेज सकते हैं स्टूडेंट? इफ रोबोट्स गेट हर्ट, सो देर इज नथिंग मीन्स, अगर उनको हर्ट होता है या फिर समथिंग मीन्स, इफ देर इज अ डेंजरस टास्क, उस जितना ह्यूमन को रिस्क है उतना रोबोट्स को रिस्क नहीं रहता है। वो लोग इजीली वहां पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बट मे बी उसी जगह अगर ह्यूमन जा रहा है तो मे बी उसको कुछ रिस्क है या उसको कुछ हर्ट हो रहा है। ऐसे प्लेसेस के लिए हम लोगों ने रोबोट्स को डेवलप किया था। They are used routinely to carry out many tasks that people don't want to do because such jobs are boring, dirty or dangerous. Any reason, कई jobs ऐसे होते हैं, like अगर किसी
बहुत ही ज्यादा हिल स्टेशन पे जाना है या किसी बॉटम ऑफ सी में जाना है जहां पर ह्यूमन को डेंजर लग रहा है या नॉट फीलिंग वेल टू गो देयर, सो हम लोग वहां पे रोबोट्स को इजिली भेज सकते हैं। Japan leads the world in robot technology by using robots in restaurant kitchens to make sushi and chop vegetables. तो जापान ने भी रोबोट टेक्नोलॉजी को यूज किया था, कहाँ यूज किया था? रेस्टोरेंट में, ताकि वो इजीली वर्क कर सके जैसे कि ह्यूमन वर्क करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो लिया है, आई विल शो यू। यस साक्षी, सुशी इज समथिंग जो कि हम लोग किचन में प्रिपेयर करते हैं। इट इज अ नेम ऑफ डिश। लाइक हम लोग वेजिटेबल चॉप्स करते हैं, कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं, तो सुशी सम समथिंग इज देयर। ओके, सो आई होप वीडियो इज विजिबल। यस और नो? शुड आई स्टार्ट इट? ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट सी। ओके, आई एम ऑडिबल? यस और नो? ओके, सो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। वीडियो में कोई वॉइस नहीं था स्टूडेंट, देयर इज नो वॉइस, नथिंग, जस्ट जो भी उसके कमेंट्स थे वो नीचे आ रहे थे। तो आई हैव सो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक रोबोट इजीली वो सारे वर्क परफॉर्म कर रहा है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपने किचन में परफॉर्म करता है। लाइक वेजिटेबल्स को चॉप करना, देन उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना, आफ्टर दैट जो भी किचन है उसको क्लियर करना, एवरीथिंग। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे हमने एक रोबोट्स को डिफिकल्ट टास्क से डे टू डे लाइफ में भी इंक्लूड किया है। लाइक पहले हम लोग रोबोट को यूज करते थे ताकि वो डेंजरस टास्क परफॉर्म कर सकें, ऐसे प्लेसेस पे जाएं जहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ह्यूमंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बट नाउ वी आर यूजिंग दीज रोबोट्स इन डे टू डे लाइफ। लाइक वी कैन यूज इन kitchen, we can use in for home cleaning, we can use in hospitals, evenly we can use in military or defense purpose. Yes or no? Are you satisfied with me or no?
So I hope you understood that what is robot, matlab what do you mean by robot and why we are using it. Now we are going to see what are robots in the terms of. Okay, so this is basically a perfect definition that a robot. What is robot? A robot is an autonomous system. Very important word, student. Autonomous system. A robot is an autonomous system which exists in the physical world, can sense its environment and can act on it to achieve goals. Means what? एक रोबोट क्या है स्टूडेंट? ऑटोनोमस सिस्टम है. Why we are calling it autonomous system? Autonomous का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जो कि कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट इंक्लूड नहीं करता है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल उसको नहीं लेता है, वो खुद से डिसीजंस लेता है, उसको बोलते हैं हम autonomous system. So a robot is an autonomous system which exists in the physical world, can sense its environment and can act on it to achieve some goal. What do you mean? एक सिस्टम है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है. यस ऑफ कोर्स हम लोग उसे डे टू डे डेंजरस टास्क के लिए यूज कर रहे हैं. दैट मीन वो फिजिकल वर्ल्ड में रहकर ही परफॉर्म कर रहा है, सेंस कर रहा है एनवायरनमेंट को. सेंस कैसे करेगा स्टूडेंट? जैसे हम ह्यूमन बींग है, हम लोग अपने आईज, अपने ईयर्स, अपने नोज का यूज करके हम एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं. वैसे ही रोबोट्स के पास भी कुछ सेंसर्स रहते हैं जिसका यूज करके वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उस पर एक्ट करता है और उसके बाद ही वो गोल अचीव करता है. दैट मीन्स जब तक वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस नहीं करेगा, उसको ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि उसको इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कलेक्ट कहाँ से करनी है. क्लियर है? यस और नो? ओके, सो आई होप आप लोगों ने आपने देखा होगा कि मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया. अ रोबोट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम. Autonomous means act on the basis of its own decision and is not controlled by a human. Means जो खुद से डिसीजन ले रहा है, ना कि उसको कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है. Exist in the physical world, can sense in environments. Robot and sensors in order to get information from the world. Okay. Taking actions to respond to sensory inputs and to achieve what is desired is a necessary part of being a robot. Means जब तक वो properly sense नहीं कर सकता है अपने environment को, तब तक वो अपना जो भी कर सकता. अभी क्या है? What do you mean goals achieve करना है? कैसे work करता है एक robot? एक मशीन स्वीपर की तरह स्पेस में यूज कर सकते हैं. रिमूविंग माइंस इन अ वॉर फील्ड, हम लोग वॉर के लिए यूज कर सकते हैं. ऑटोमेटिक कार फॉर चाइल्ड टू प्ले विद इन मिलिट्री एक्सेट्रा. ये वो सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट? यू कैन आस्क मी. यस और नो? shall I move ahead? Okay. So what are the essential characteristic of robots? अभी रोबोट क्या होता है, रोबोट का यूज कहाँ होता है, वो तो हमने देखा. बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? क्या कंपोनेंट्स को यूज करके हम लोग एक रोबोट्स वर्क परफॉर्म करता है, वो विल सी वन बाय वन. So just read this slide for 2 minutes at least and then I'll explain you. Just read it.
Yes, done everyone? Okay. So what are the characteristics? First one is sensing. The robot should be able to sense its surroundings, and that is only possible with the help of sensor. Like I said, student, being a human, हमारे पास भी कुछ sensors हैं जिनको use करके हम sense करते हैं. In the same way, हम लोग इन द सेम वे हर रोबोट्स के पास भी कुछ सेंसर्स रहते हैं जिनके हेल्प से वो अपने जिनकी हेल्प से वो अपना जो भी सराउंडिंग जिसके हेल्प से वो अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं और वो कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स ओनली. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंसर्स? लाइट सेंसर आईज में यूज कर सकते हैं, टच सेंसर हैंड्स के लिए, हियरिंग सेंसर ईयर्स पे और केमिकल सेंसर्स नोज पे. तो these are the types of sensor which are using robots to sense its environment or surrounding. Only after that only they can perform any task. I hope you are clear. Yes or no? These are the types of sensor which robots use. But we are in the coming lecture, we are going to see in the depth what are the different sensor exactly robots are using. So what is movement? A robot needs to be able to move around its environment, whether by rolling on wheels, walking, snacking or skating. Of course, एक robot को अगर हम एक place से दूसरे place पे भेज रहे हैं, तो उनको वॉक करना ही होगा. अब वो वॉकिंग थ्रू रोलिंग भी हो सकता है, थ्रू स्नैकिंग भी हो सकता है, थ्रू स्केटिंग भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स. बट द थिंग इज उनको मूव करना होगा. व्हाई मूवमेंट स्टूडेंट? अगर रोबोट ऑटोनोमस सिस्टम है देन वो खुद से डिसीजन लेगा कि वो उसको कौन से प्लेस पे जाना है. इफ दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन दे शुड बी मूव. यस और नो? Second one, energy. A robot needs to be able to power itself, which depends upon its पावर रिसोर्सेस. मीन्स अब एक जैसे हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, हम लोग अलग अलग टाइप्स की मशीन यूज करते हैं. आप लोग यूज करते होंगे. यू कैन सी जैसे हम लोग अपने मोबाइल यूज करते हैं, एक टाइम आता है आफ्टर दैट हम लोगों को उसको चार्ज करना पड़ता है. वैसे ही एक रोबोट एक मशीन है, उसी तरह हमको उसको भी चार्ज करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं लाइक बैटरीज, पावर, जनरेटर्स एंड फ्यूल्स. आई होप क्लियर. यस और नो? Is there is there any doubt in this slide, student? Everyone is clear? Okay. And third characteristic, intelligence. Our robots needs to be intelligent and smart, which is only possible with a programmer person. Sorry for the mistake. The programmer spelling is wrong. Okay. सो इंटेलिजेंस मीन स्टूडेंट एक रोबोट है, हम लोग उसको कुछ कमांड्स दे रहे हैं, वो कमांड्स वो अंडरस्टूड हो रहा है, इतना इंटेलिजेंस उसके पास होना चाहिए. अगर हम उसको बोल रहे हैं कि उसको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, दीज आर द कमांड्स विच आर given by some external commander. But the thing is a robot needs to be that much intelligent or smart that so रोबोट्स नीड अंडरस्टैंड कमांड. मीन्स हम लोगों को रोबोट्स को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा, इतना इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना होगा कि वो अपना जो भी एक्सटर्नल कमांड है या जो अपना इनबिल्ट कमांड है उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. ऐसा ना हो कि हम लोग अलग कमांड दे रहे हैं और वो अलग प्रोसेसिंग कर रहा है. देन देयर इज अ एरर एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस आल्सो. यस और नो? यस और नो स्टूडेंट? Okay. Types of robots. So what are the different types of robots? First one is mobile robots. What are mobile robots? They are able to move around their environment and not fixed to one physical location. There are some robots student जो कि एक ही प्लेस पे फिक्स रहते हैं और अपना वर्क परफॉर्म करते हैं. बट what are mobile robots? जो कि मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस और अपना जो भी वर्क है वो परफॉर्म करते हैं.
What are industrial robots? They are used in industrial manufacturing environment, like welding है, material handling है, painting है, under जो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड वर्क होगा उसके लिए हम जिन रोबोट्स का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट. Domestic or household robot, robots used at home such as robotic vacuum cleaner, robotic pool cleaner, sweeper, इनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक और हाउस होल्ड रोबोट. मीन्स जिनका यूज हम अपने होम में या डोमेस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हैं. मेडिकल रोबोट, रोबोट यूज्ड इन मेडिसिन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन. सर्जरी रोबोट, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में भी हम लोग रोबोट्स का काफी यूज कर रहे हैं. लाइक फ्रॉम, अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम कुछ मेडिसिन कैरी कराना है या ड्यूरिंग ऑपरेशन इफ सम है, हम लोग वहां पे भी रोबोट्स का यूज कर सकते हैं. एंड वी आर यूजिंग in some places in medical field robots are used. Service robot, robot that don't fall into other type of usage. Robots used for research, like service robot मतलब अगर हमको उसको कुछ स्पेस रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड कहीं पे हम रोबोट्स का यूज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं सर्विस रोबोट. सर्विस मतलब कोई प्रॉपर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. मिलिट्री रोबोट, दे आर यूज्ड इन मिलिट्री, जैसे बॉम्ब डिस्पोजल हो गया, माइंस रिमूवल हो गया, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन. लाइक डिफेंस फील्ड में भी काफी ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है. लाइक उनका जो भी वर्क रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस लेके जाना या एनीथिंग एल्स, तो वहां पे हम लोग मिलिट्री रोबोट का यूज कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यस और नो? Is there any doubt to anyone? So we'll see one by one. These are industrial robots, जैसे मैंने आपको बोला, जो वेल्डिंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग, पेंटर, जिनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, मोबाइल रोबोट. यू कैन सी ये लोग ये इजीली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज हाउ, मैंने जैसे बताया क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. सी दिस इज मेडिकल रोबोट्स. हम लोग कैसे मेडिकल में रोबोट्स का यूज कर रहे हैं. Next one is last one is military robots. I hope you are clear. Yes or no? Okay. In the next we'll see type of robot. Type of robots में हम लोग other type के robot देंगे. Like stationary क्या होता है, wheeled क्या होता है, mobile क्या होता है, animal robot, flying robot, legged robot and autonomous robot क्या होता है. Autonomous robot is very important. So we'll see. So first one is stationary robot. These are robots that are fixed in low position. They tend to move. They tend to have robot arms that can move about. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ही प्लेस पे फिक्स रहते हैं और अपना जो भी वर्क है परफॉर्म करते हैं. लाइक यू कैन सी, उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी रोबोट. मतलब एक ही प्लेस पे फिक्स रहते हैं और सिर्फ अपने आर्म्स को यूज करके जो भी अपना वर्क है वो परफॉर्म करते हैं. ओके, आर यू क्लियर? Yes or no? Next is mobile robot. A mobile robot is a machine controlled by software that use sensor and other technology to identify its surrounding and move around its environment. जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, रोबोट क्या होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर थ्रू कंट्रोल करते हैं. मतलब हम उनको ऐसा प्रोग्राम करते हैं और वो अपने सेंसर्स को और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Mobile robots function using a combination of artificial intelligence and physical robotic elements such as wheels, tracks and legs. Means अगर रोबोट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो उसको दो ही चीजों का नीड है. फर्स्ट वन इंटेलिजेंस, मतलब उसको कैसे मूव करना है ये पता होना चाहिए, और मूव करने के लिए उसको जो भी व्हील्स का, लेग्स का यूज है वो. मतलब एक होता है इंटेलिजेंस एंड द थर्ड अदर थिंग इज फिजिकल एलिमेंट्स. आई होप यू आर क्लियर. यस और नो?
Clear everyone? Okay. Yeah, sure. So mobile robot क्या है? It is a machine controlled by software. सॉफ्टवेयर का मतलब हम लोग उसको प्रोग्राम करते हैं. ओके, मीन्स थ्रू कोडिंग हम उसको ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि वो जो हमारे कमांड है उसको इजीली अंडरस्टूड करेगा. दैट यूज सेंसर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई इट्स सराउंडिंग एंड मूव अराउंड इट्स एनवायरनमेंट. मतलब अगर मोबाइल रोबोट या कोई भी रोबोट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है तो वो क्या क्या चीज का नीड होगा. फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्यों? ताकि वो जो भी अपने एक्सटर्नल कमांड्स है उनको अंडरस्टूड कर सके. सपोज मैं उसको बोल रही हूँ लेफ्ट टर्न लेने के लिए, बट द थिंग इज उसका इंटेलिजेंस है कि वो मेरे कमांड को अंडरस्टूड ही नहीं कर पा रहा और वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? मीन्स अगर एरर है तो हम लोग फिर रोबोट का यूज ही क्यों कर रहे हैं. So first of all, intelligence should be there, and the second one is physical robotic elements. What's physical robotic elements means उस जैसे wheels, tracks, legs. अब उसको पता है कि हाँ मुझे लेफ्ट में जाना है या राइट में, बट द थिंग इट वो कैसे जाएगा लेफ्ट राइट में. कुछ तो होना चाहिए. लाइक मुझे अगर मूव करना है तो मैं अपने लेग्स का यूज कर सकती हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वैसे ही रोबोट्स के लिए भी हम लोग कुछ एलिमेंट्स का यूज करते हैं, लाइक व्हील्स हो गया, लेग्स हो गया, ट्रैक्स हो गया. यस और नो? Are you clear now? Okay, so we'll move ahead. Next one is animal robots. What is animal robot? The robot having a structure like an animal. Jinka, if you have a network problem, student, you can rejoin the meeting. No issue. Okay. सो जिनका स्ट्रक्चर एनिमल लाइक होता है उन रोबोट्स को हम एनिमल रोबोट बोलते हैं. लाइक आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, हम लोग बर्ड्स लाइक बर्ड्स रोबोट्स का यूज करते हैं. अगर हमें कोई भी अपना मैसेज पास करना है या कुछ भी हमें, अगर हम उसमें वीडियो एम्बेडेड करके रख रहे हैं तो जहाँ पे भी हम उनको जहाँ का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उनको इजीली सेंड कर सकते हैं. और यूजिंग दैट वीडियो, यूजिंग दैट सेंसर, हम लोग इजीली वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो इजीली देख सकते हैं. यस और नो? Okay. Next one is legged robot. Legged robots are a type of mobile robot which use limbs such as leg mechanism to provide locomotion. Locomotion का मतलब होता है student movement और the ability to move from one place to another. तो locomotion क्या होता है? ability, ताकि वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे easily move कर सके. और ऐसे रोबोट्स को हम लोग लेग्ड रोबोट बोलते हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे हम लोग लिम्स या लेग मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं. लाइक हम सिंपली से लेग्स का यूज कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो उनको बोलते हैं लेग रोबोट. What do you mean by autonomous robot? Autonomous robots are intelligent machines capable of performing tasks in the world by themselves. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑटोनोमस रोबोट क्या होता है? वो रोबोट जिनके पास खुद का इंटेलिजेंट होता है ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके विदाउट एक्सप्लिसिट ह्यूमन कंट्रोल. कोई भी ह्यूमन कंट्रोल की उनको जरूरत नहीं है. तो इंडियन कंपनी ने जो फर्स्ट ऐसे दो रोबोट्स निकाले थे उनका नाम था ब्रावो एंड मित्रा. ऑटोनोमस रोबोट क्या होता है? वो रोबोट जिनके पास खुद का इंटेलिजेंस होता है ताकि वो अपने टास्क परफॉर्म कर सके और कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है. और ऐसे दो रोबोट्स इंडिया ने प्रोवाइड किए थे जो कि थे ब्रावो एंड मित्रा. दीज आर इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस रोबोट्स. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एक्टरॉइड रोबोट. एक्टरॉइड रोबोट क्या है? स्ट्रक्चर टोटली लाइक अ ह्यूमन बीइंग. आप पिक में देख रहे होगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, एकदम ह्यूमन जैसा है. ऐसे रोबोट्स को जिनका जो टोटली स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बीइंग जैसा रहता है उसको हम बोलते हैं एक्टरॉइड रोबोट. ओके, क्लियर है? यस और नो?
So I hope what do you mean by robots, why robots are used, and the types of robots are clear to you. Is there any issue? Okay, now we'll see some history of robots कि first ये robots आया कहाँ से था, मतलब किसने डेवलप किया था. Where do robots come from? History of robot. So the first robot is typically considered to be W. Gray Walter's tortoise in 1940 based on our definition of robot. जो हमारा definition है robot का, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो फर्स्ट रोबोट था वो था ग्रे वॉल्टर टॉर्टोइस. ओके, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा था, ये था हमारा फर्स्ट रोबोट. ग्रे वॉल्टर का नेम जिसने ये डेवलप किया था. आई शो यू वन वीडियो कि ये हमारा जो फर्स्ट रोबोट था वो किसने डेवलप किया था और कैसे वर्क होता था. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फर्स्ट रोबोट. हैव यू सीन? So now I'll show you one video. Just wait. Is my video visible to you, student? Yes or no? Okay, wait, let me start. Yes, so I hope आप लोगों को वीडियो विजिबल था. Yes or no? Okay. Yes. Yes, we'll see what are the function और कैपेबिलिटीज ऑफ दिस रोबोट. सी स्टूडेंट, आपने वीडियो में एक चीज नोटिस की थी, जब भी हम उसके
उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल ला रहे थे, तो वो कैसे अपने आप से अपना जो भी पाथ है वो चेंज कर रहा था. This is the first law, or you can say this is the law that robot has to. मीन्स अगर एक रोबोट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल से ऑटोमेटिकली अपना जो भी पाथ है ना वो चेंज कर ले रहा था. yes or no? So let's see one by one what are the different capabilities. Okay, machines with properties similar to those of biological system are called as biometric. There is no use of this. The turtles were simple robot built with 3 wheels in a tricycle like design, using the front wheel for steering and the 2 back wheels for driving. They are covered with a clear plastic shell. So जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे देखो, this is our first wheel, front wheel, and these 2 are back wheels. I hope this is clear to you. This is our front wheel and these 2 are बैक व्हील्स. तो जो आप लोगों ने देखा फ्रंट व्हील का यूज हम कर रहे हैं स्टीयरिंग के लिए, और जो 2 बैक के व्हील्स हैं उसका यूज क्या कर रहे हैं हम लोग ड्राइविंग के लिए. और आप देख रहे हो ये टोटली किससे कवर है, प्लास्टिक शेल से. यस और नो? आर यू क्लियर? ओके. So, William Gray Walters gave his turtles Latin names to describe their behavior, such as Machina speculatrix and Machina docilis. उसने अपने जो रोबोट्स हैं उसको क्या नाम दिया था, Machina speculatrix और Machina docilis. Machina speculatrix means machine that thinks or speculates, and Machina docilis means machine that can be tamed or taught. उसने ये नेम क्यों प्रोवाइड किया था? उसका मानना था ऐसी मशीन जो थिंक कर सके, और ऐसी मशीन जिसको हम कुछ बता सके या ट्रेंड कर सके. इस बेसिस पर उसने अपने जो रोबोट को है मशीना स्पेकुलेट्रिक्स और मशीना डॉसिलिस नेम दिया था. आई होप आर यू क्लियर विद दिस? देखा रोबोट में है ट्राइलाइकल लाइन में है, एक फ्रंट व्हील है, 2 बैक व्हील है. फ्रंट का यूज हम लोग स्टीयरिंग के लिए करते हैं, बैक 2 व्हील्स का हम लोग हैं. ये क्लियर प्लास्टिक शेल से कवर होता है. विलियम ग्रे वॉल्टर्स ने इसको डेवलप किया था, और उसको नाम था वो दिया था मशीना स्पेकुलेट्रिक्स एंड मशीना डॉसिलिस. मशीना स्पेकुलेट्रिक्स का मीन्स जो कि मशीन जो थिंक कर सके, और या जिसको हम कुछ टॉट कर सके, टेम कर सके. क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस और नो? Yes or no? Should I move ahead? Okay. Machina spectrometers. अभी ये क्या क्या कंटेन करता था? 1 फोटो सेल, अ सेंसर दैट डिटेक्ट लाइट. इसके पास क्या था? एक फोटो सेल जिससे वो लाइट को डिटेक्ट कर सकता था. 1 बम सेंसर, अ सेंसर दैट डिटेक्ट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट. बम सेंसर का वर्क क्या था? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो डिटेक्ट कर सकता था. एक रिचार्जेबल बैटरी, 3 मोटर्स, 1 फॉर ईच व्हील. हमने देखा था 3 व्हील्स है जो कि ट्राईसाइकिल डिजाइन में है. हर व्हील के लिए एक मोटर, मतलब टोटल 3 motors are there. 3 wheels are there. 1 analog electronic circuit using 2 vacuum tubes serving as a brain and connecting the 2 sensor with the wheels. The wheels of brain का यहाँ पे क्यों बताया? ताकि उसको किस डायरेक्शन में हमको टर्न करना है, इसके लिए. बिहेवियर और कैपेबिलिटीज, मतलब जैसे जिसने एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि इस रोबोट से क्या बिहेवियर थे. Find the light, head toward the light, back away from white light, turn and push to avoid obstacles, recharge battery. तो वो क्या क्या कर सकता था? लाइट फाइंड कर सकता था कि किस एरिया में लाइट है, डिम है, कैसी है. हेड टूवर्ड द लाइट, अगर उसको कोई पॉजिटिव लाइट मिलती थी तो वो उसके तरफ जाता था. अगर उसको कोई नेगेटिव लाइट दिखती थी तो वो वहां से बैक होता था. टर्न एंड पुश टू अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो टर्न करता था वहां से, जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा, और जो भी बैटरी है उसको रिचार्ज करता था. आई होप दिस मच इज क्लियर. आई होप हिस्ट्री ऑफ रोबोट इज क्लियर टू यू. किसने उसे डेवलप किया था, क्या उसका स्ट्रक्चर था, क्या उसके कैपेबिलिटीज थे? इज देयर एनी डाउट?
ओके, तो टुडे लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज रोबोटिक्स। अभी तक हमने देखा स्टूडेंट रोबोट्स क्या होता है, नाउ रोबोटिक्स क्या होता है। Robotics is a branch of artificial intelligence. It is mainly composed of electrical engineering, mechanical engineering, and computer science engineering for construction, designing, and application of robot. तो robots क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ब्रांच है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्यों, क्योंकि जो रोबोट्स है वो किस पर वर्क करते हैं, एक इंटेलिजेंस पे। क्या कंपोज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जिनका क्या वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और एप्लीकेशन यूज करने के लिए। Robotics is science of building or designing an application of robot. Okay, the aim of robotics is to design an efficient robot. Okay, तो aim क्या है robotics का, ताकि हम एक efficient robots को डिजाइन कर सकें। Aspects क्या है, robots have electrical components for providing power and control the machinery. Means electric components should be there. They have mechanical construction, shape or form designed to accomplish a पर्टिकुलर टास्क। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, ताकि जो भी हमने उन्हें टास्क दिया वो उसको फुल फिनिश कर सके और टोटली डन कर सके। इट कंटेन्स सब टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस व्हाट व्हेन एंड हाउ अ रोबोट डज समथिंग। इसको हम थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम भी करते हैं, ताकि कब रोबोट को क्या, कब और कैसे परफॉर्म करना है, उसका इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर, यस और नो? Okay, so last slide. Three laws of robotics. These are very important. First law क्या है? A robot cannot injure a human being, or through inaction it allows a human being to come to harm unless it would violate the higher order law. फर्स्ट लॉ का मतलब है कि वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं कर सकता है। ये प्रॉपर्टी एक रोबोट को फॉलो करनी चाहिए। A robot should follow the orders given by it human being, except when such order given by humans would conflict with higher order law. जो भी order एक human being दे रहा है वो properly follow करना चाहिए। A robot is allowed to protect its own existence as long as such protection would not conflict with a higher order law. जैसे एक रोबोट किसी ह्यूमन को नहीं हर्ट कर सकता है, वैसे ही वो खुद को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मतलब उसको खुद की एग्जिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो किसी ऑब्स्टेकल के साथ हार्म ना हो, इंजर्ड ना हो। दीज आर द थ्री लॉज ऑफ रोबोटिक्स। किसी ह्यूमन को हार्म नहीं करना चाहिए। सेकंड, अपने जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है उन्हें फॉलो करना चाहिए। एंड द थर्ड, वो अपनी एक्सिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, यस और नो? So till here we are done. This is our first day task which we have completed. So do you have any doubt regarding anything? You can ask in a chat box. Do you want something else? If you want, you can tell me. Higher order in law means suppose जैसे हम लोग ने कोई सपोज एक कॉलेज है, उसके कुछ लॉस हैं, वो आपको परफॉर्म वो प्रॉपरली फॉलो करने हैं। बट द थिंग इज, जैसे ही आप एक डिपार्टमेंट के अंदर आते हो या आप किसी क्लास के अंदर आते हो, तो वहां पर भी हम लोग आप लोगों को कुछ ऑर्डर्स देते हैं। दैट मीन्स वो दोनों जो ऑर्डर्स है ना, वो कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। आपके जो डिपार्टमेंट में जो ऑर्डर आपको दे रहे हैं और जो आपको कॉलेज दे रहा है, इनके बीच में भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों ही फॉलो होना चाहिए। ओके, रोबोटिक्स के थ्री लॉज हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। एट द सेम टाइम जो ह्यूमन आपको कंट्रोल कर रहा है उसके भी कुछ लॉज हैं, तो आपको वो दोनों ही लॉज इजीली फॉलो करने हैं। क्लियर है? यस और नो? इज देयर एनी डाउट, अदर स्टूडेंट?
So yes, if you have no doubt and you are clear, so you can leave. And if you have any doubt or you want something extra, you can tell me, no issue. As I already told you, higher order means कोई एक इंस्टीट्यूट है, लाइक मैंने आपको जैसे बताया, जैसे ये एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, इसके कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स है। एट द सेम टाइम जब आप डिपार्टमेंट में जाते हो, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टीचर का भी आपके लिए कुछ लॉज होते हैं, तो वो आपको एट द सेम टाइम दोनों ही को फॉलो करना है, दोनों को ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। क्लियर है? हायर ऑर्डर लॉज, आई टोल्ड यू स्टूडेंट, राइट नाउ आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं। जब भी कोई चीज डेवलप होती है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब आप इस कॉलेज में एंटर करते हो तो इस कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। लाइक आपको आईडी दिखाना ही है गेट पे, आपको प्रॉपरली अपने क्लास में जाना है, डिपार्टमेंट। एट द सेम टाइम जब आप क्लास में जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उसके भी कुछ लॉज है। जैसे आप लैब में जाओगे तो उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको प्रॉपरली शूज निकालना है, आपको बैग बाहर ही रखना है, वाटर बॉटल अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही दो टाइप के लॉज हैं, तो आपको दोनों को ही एट द टाइम फॉलो करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस और नो? सी, जो हायर ऑर्डर लॉज हैं वो हर रोबोट के लिए सेम है। लाइक उसको कोई भी ह्यूमन को इंजर नहीं करना है। सेकंड, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। एंड द थर्ड वन है उसकी खुद की एक्सिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरा जो लॉज आता है, सपोज मैं किसी रोबोट को कंट्रोल कर रही हूँ, तो मेरे कुछ कमांड होंगे, मेरे भी कुछ रूल्स होंगे, तो एट द सेम टाइम रोबोट को वो भी फॉलो करने हैं। ना ही उसको अपने हायर ऑर्डर लॉ भूलना है और ना ही उसका जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है उसके लॉस, उसको एट द सेम टाइम दोनों ही फॉलो करने हैं। क्लियर है? ओके। So those who have any doubt, they can remain in the lecture. Else, remaining one, they can leave the lecture. We will meet in next lecture, that is tomorrow from 9 to 11. Okay. And I hope everything is fine. I hope there is no issue and problem. Do you have any issue and problem in this lecture? You can tell me. So should I end the meeting if you have no doubt? Okay. So bye everyone. Take care.